Students, we are on the first and we can say the last topic of this chapter, which is from the grammar. And this topic is about the adjective and adverb phrases. First of all, you must know what basically a phrase is. So student, phrase is a group of words without any logical meaning. एक ऐसा अल्फाज का मजमुआ जो कुछ स्पेसिफिक मीनिंग नहीं कन्वे करता, उसको हम फ्रेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द कॉर्नर. नाउ दिस एग्जाम्पल कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स इन द कॉर्नर, बट इस वर्ड्स को हमें पढ़ने से कोई लॉजिकल मीनिंग कन्वे नहीं होता. एंड द फ्रेज इज ऑलवेज विदाउट अ वर्ब एंड सब्जेक्ट. फ्रेज जो है वो हमेशा वर्ब और सब्जेक्ट के बगैर होती है. इसी की वजह से हमें इसका मीनिंग कन्वे नहीं होता, लॉजिकल मीनिंग कन्वे नहीं होता. वी कैन से, तो हम इस वर्ड को इन द कॉर्नर को हम किसी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ अटैच करें और वी कैन से द डस्टर इज प्लेस्ड इन द कॉर्नर. नाउ ये एक प्रॉपर मीनिंग वाला सेंटेंस है कि डस्टर जो है ना वो कॉर्नर में रखा गया है. लेकिन सेपरेटली इन द कॉर्नर, दिस इज ओनली अ फ्रेज विदाउट एनी लॉजिकल मीनिंग. ये एक फ्रेज है. तो हर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट हैविंग लॉजिकल मीनिंग, और वी कैन से विदाउट हैविंग सब्जेक्ट और वर्ब, वी कॉल इट फ्रेज. Here we are only concerned with adjective phrase and adverb phrase. First of all, let's discuss the adjective phrase. As you know that adjective is a word which describe noun or pronoun, और phrase को हमने discuss कर लिया कि phrase is a group of words. So we can say that an adjective phrase is a group of words that does work of an adjective. पहले तो हमने एक सिंगल वर्ड्स को एडजेक्टिव स्टडी किया था कि एक सिंगल वर्ड जब एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनके बारे में हमें डिस्क्राइब करता है, उनकी क्वालिटी के बारे में हमें बताता है, उनकी साइज के बारे में बताता है. लेकिन एडजेक्टिव फ्रेजेस एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स काम करती हैं, लेकिन वो एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एज एन एडजेक्टिव काम करती है. पूरे के पूरे, अगर 3 वर्ड की एक फ्रेज है तो वो पूरे के पूरे 3 वर्ड्स एज एडजेक्टिव काम करेंगे, लेकिन उन 3 वर्ड्स में जो हेड वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा. फॉर एग्जाम्पल, टेक दिस सेंटेंस एज एन एग्जाम्पल. आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस. in this sentence smiling is an adjective. यहाँ पे एक सिंगल वर्ड जो है वो एज एन एडजेक्टिव का हम कर रहे हैं, बट हम इसी सेंटेंस को जब हम इस तरह लिखते हैं दैट आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज वर्ड्स विद a smile on it, ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, बट मिल के काम कर रहे हैं एज एन एडजेक्टिव. और ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? ये फेस को क्वालिफाई कर रहे हैं कि विद अ स्माइल ऑन इट. टेकन अनदर एग्जांपल हियर दैट शी हैड एक्सट्रीमली menacing eyes. तो यहां पे एडजेक्टिव फ्रेज extremely menacing. This phrase is actually describing about, or we can say giving us extra information about the eyes. Taking another example, the dog covered in the mud is mine. Covered in mud is an adjective phrase consists of 3 words, covered in and mud. It thoroughly, on the whole, it works as an adjective and it's qualify, or we can say it's give us, or it describes the dog that we are talking about, the dog who is covered in mud. So in all of these examples, the adjective phrase are the group of words combinedly work as an adjective in a sentence. I hope you understand the concept of adjective phrases. Now let's move towards the next phrase, that is adverb phrase. Adverb phrase similarly is a group of words that does the work of an adverb. It means the adverb is a word which describes about the verb. Adverb वो word है जो हमें verb के बारे में बताता है, यानी काम के बारे में बताता है कि वो कैसा हो रहा है. As similarly to the adjective phrases, क्योंकि combination of words जो हैं वो जब phrases combination of word को कहते हैं और
a group of words that does the work of an adverb. जब बहुत सारे we can say group जो है ना वो properly on the whole adverb का काम करेगा तो हम उसको adverb phrase कहेंगे. Let's take an example. Ali ran quickly. यहाँ पे quickly जो है वो normal single word adverb है. But when we write this sentence in this way, that Ali ran at great speed. Now, at great speed is an adverb phrase consists of 3 words which actually on the whole work as an adverb because it tells us that how the Ali is running. Taken another example, we will escape later. Here the word later is a normal adverb, is a single word adverb, but we can say that we will escape when the sun rises. Now all of these words when the sun rises act as an adverb. So we call it adverbial phrase or adverb phrase. So you can easily know that group of words which work as an adverb or as an adjective are known as adjective phrases or adverb phrases. I hope you understand the concept of adjective and adverb phrases. My name is Sardar Hamza. I'm your English instructor from tutoria.pk. I hope you understand this poem very well. Let's move to the exercise of this chapter.